Mahim? Right. Okay. Hello, everybody. मेरा नाम माहिम मेहर है, and I'm the coordinator for the Center for Excellence in Journalism's Wellbeing Center at the IBA in Karachi. And today is World Mental Health Day. So we decided to talk about a topic which is very close to my heart, which is anger in the newsroom. So I asked Dr. Asha Bedar and Mahnoor Sheikh, who are our clinical psychologists. Dr. Asha continues to provide the free therapy to the journalists at the Wellbeing Center, and Mahnoor was with us for roughly about a year. And so we decided usually our workshops were face-to-face, so we've had other topics that we've discussed, such as medication, stress management in the newsroom. And one of the things that has come up quite often is anger in the newsroom. So we're going to have a discussion for 1 hour about the topic. And I thought it would be easy कि हम इसको एक easy open discussion रखें. So जिन्होंने join किया है, if you have any questions, please just add them into one of the chat windows and we'll convey them. And Mahnoor or Dr. Asha will answer the questions. I think one of the things I have struggled with in the newsroom is anger. My own anger, actually, and of other people. I'm also terrified of people getting angry at me in the newsroom. So one of the things that I realized over time is that newsrooms are not places where it's very easy to express your anger. And but it's part of the job, क्योंकि अगर आप story लेके आ रहे हैं, आपने उस पे मेहनत की है, वो reject हो रही है, या आप जो बात कर रहे हैं, किसी ने उसको रद्द कर दिया, so you feel anger, even though it's critical feedback, and while we would like for people to always give us positive critical feedback, इस तरह होता नहीं है. Newsroom में लड़ाइयाँ भी होती हैं और 5 मिनट बाद you have to be working with the same people. Then newsrooms में अलग किस्म के लोग होते हैं, which some people have stronger personalities, journalists बड़े opinionated लोग होते हैं, and some people are maybe sort of quieter people. So it's all kinds of backgrounds coming together, and it's often explosive. फिर लोग जब खफा हो जाते हैं, it's very difficult कि आप अलग से किसी को ले जाकर वो express करें, भाई आपने ये बात की थी, मुझे बुरा लगा. Expression of anger, how to cope, and तंज भी बहुत चलता है, which I know लोगों को frustrating भी लगता है, because there are fragile egos at work. So maybe you've been treating journalist Dr. Asha and Mahnoor, you also you were part of the clinic. I have a couple of questions कि जो journalists आपके पास आते थे in therapy, did they bring up anger, and do you feel it's different in a newsroom from any other workplace? And how can you even understand what anger is as an emotion? Dr. Asha, if you could start off. Yeah, I can start that off. Thank you very much, Mahnoor, and the Center of Excellence in Journalism. I think गुस्सा जो है, anger का जो emotion है, it's one of the most misunderstood emotions, I would say. क्योंकि वो एक core emotion भी है, और वो underlying emotion भी है, और वो एक cover emotion भी है. और उस पे हम थोड़ी बात भी करेंगे, Mahnoor and I, a little bit later. But your question, do journalists bring it up? Most definitely. Anger was one of the issues, conflict, hostility, जो बहुत ज़्यादा journalists लेके आते थे और बात भी करते हैं अभी भी. Sometimes as the main issue, and sometimes, as I said, अगर वो बात उस पे नहीं भी कर रहे थे, very often it was the background issue that came up, or the cover issue that came up, or the underlying issue. वो बात शायद relationships की कर रहे होते थे कि colleagues के साथ इस issue को किस तरह से handle करें, या ये competitive environment है उसको किस तरह से handle करें, या stress को किस तरह से करें. But anger was very often and is very often a part
of the issue that I brought up. So I think pehle, just to start this off, and Manur can add to this, it's that anger is a very normal, natural core emotion. I think ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा जब लोग आते हैं, part of their frustration is that they think कि हमारे में कोई problem है, मतलब हम इस तरह का हम एक बात कर रहे हैं which is गलत, हम गुस्से को गलत समझते हैं कि गुस्सा करना जो है वो गलत बात होती है. बचपन से दो ज्यादा messages that we hear हैं कि गुस्सा बुरी बात है, गुस्सा गलत बात है. तो हमारे शुरू से जो एक relationship है एक core natural emotion के साथ is a negative one. So I the feel first thing guilty that I because would, of gussa. guilty for just feeling angry even. कि मुझे Yeah. आया क्यों? तो हम उस गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं, हम किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं कि वो गायब हो जाए, डिनाई कर लें, उस पर बात ना करें, वो छुप जाए गुस्सा. So one of the first things that I do with clients जब वो गुस्से की बात करते हैं is to work on this basic understanding that it's natural. There is nothing wrong with you for feeling angry. हाँ, वो expression क्या है, वजह क्या है, beliefs क्या है, assumptions, background. But the pure feeling of anger is completely natural and normal. Where does और it become problematic? The expression of anger? Yeah, I think, maybe we'll go, Mahnoor, maybe you can add to that about the expression. So basically, as Dr. Asha said, that one thing that some of the few things that everyone should take from the session were first one and the foremost being that anger is not a forbidden feeling. So when you're feeling angry at workplace, at home, anywhere, but specifically in a workplace, just know that it's like any other feeling. Okay, so it's not that feeling angry is a forbidden or negative feeling that should be shunned. You should feel angry because a lot of good things come out of anger as well. There's a good side to being angry as well. If you are okay, so what exactly is anger, right? Anger can be, expression of it can be good or bad, but anger itself is never really bad, right? Being aggressive is bad. So we will talk about it in a few minutes. But we have to understand that why do we become angry essentially? We become angry or we are predisposed to being angry when anything like our basic identity, our food, our shelter, or our higher mature needs, जिसको हम कहते हैं कि हमारी इज्जत, हमारी अथॉरिटी, हमारी रिस्पेक्ट जो भी है उसको कोई थ्रेटन करता है तो हम गुस्सा करते हैं. ठीक है. तो व्हेन आई सेड कि गुस्सा अच्छा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी हमारी मूवमेंट्स हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट, हमारी आज़ादी मूवमेंट, हमारी औरत मार्च, ये सब गुस्से के नतीजे से निकली हैं, क्योंकि आपके राइट्स को थ्रेटन किया गया, आपको गुस्सा आया तो आप उठे. This form of anger is not bad. So like Dr. Asha said, anger essentially is not bad. It's just that in our culture and overall, we are not trained how to deal with anger as an emotion. हमें बोला जाता है गुस्सा मत करो, गुस्सा ये है, गुस्सा वो है, गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस उसको सही तरीके से करो. I think that is where we are not trained. मगर आपको ये तो बात समझ आती है कि हमें गुस्से से डर क्यों लगता है, इसलिए इसको दबाने की कोशिश की जाती है हमारे माशरे में. बिकॉज like for me it's like any issue जो काम पे, let's say for example एक चीज़ repeatedly मैंने instruction दी है वो नहीं हो रही है, and the only way वो चीज़ होएगी अगर मैं जाके आंखें दिखा के I'm like भाई ये करके दो मुझे, तो फिर सामने से अच्छा ये gendered भी थोड़ा सा male female interaction में भी I found कि मुझे बहुत ज़्यादा कहा जाता है न्यूज़रूम में कि अरे बीबी इतना गुस्सा क्यों करती हो, अरे गुस्से, and I feel like a crazy lady क्योंकि मैंने गुस्से का इजहार किया है. चलो मे बी मैं सही तरह इजहार नहीं करती, आई डोंट एक्सप्रेस इट वेल, मे बी मैं अग्रेसिव भी होती हूँ, इनफैक्ट आई वुड टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही है, बट आई डोंट नो कि मैं सही तरीके से गुस्से का इजहार कैसे करूँगी उस रूम में. So I think when you're talking about this, I feel that especially in culture, anger as an emotion, किसी जेंडर को ना उस पे कंसेशन दिया हुआ है कि you are allowed to express anger in a certain way based on your gender. And some जैसे फीमेल्स को कहा जाता है कि अच्छा नहीं लगता अगर औरतें इतना गुस्सा दिखाएं, बट मर्दों पे गुस्सा तो उनका हुस्न भी काउंट किया जाता है किसी कल्चर में. So it's how the culture has turned anger into this emotion जिसमें मना किया गया है, किसी जेंडर को इस पे कंसेशन दिया गया है. And I think Dr. Asha will also add to this. Yeah, and apart from I think concession के साथ साथ like you said, जो मैं पहले बात कर रही थी कि एंगर कवर किस तरह से करता है इमोशंस को. So just to comment on this gender वाला एस्पेक्ट जो माहिम ने उठाया है,
क्योंकि हमारी सोसाइटी में खासतौर पे मर्दों को हम कोई भी बाकी जो जज्बात हैं उनकी इजाजत नहीं देते, स्पेस नहीं देते। आपने रोना नहीं है, आपने अपना दुख, अपना डर, अपना खौफ, अपनी एंजाइटी, अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। तो द ओनली इमोशन दैट इज अलाउड टू मेन इज एंगर। तो वो डर भी लगता है, वो थ्रेटन फील करते हैं खौफ की वजह से, वो गुस्से पे निकलेगा। वो उनको उदासी भी होती है। थिंक अबाउट हमारा ग्रीफ का जो एक तरीका है कि आपको एक लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, वेरी ऑफन मर्द क्या करेंगे, चीजें तोड़ेंगे, राइट? वो गुस्सा करेंगे, वो चीखेंगे, वो चिल्लाएंगे। इट्स एक्चुअली ग्रीफ एंड इट्स लॉस, बट वो निकलता गुस्से में है। गुस्से में है। So very often gussa is a cover for all kinds of other emotions. Other emotions. So which is why with men you see that so often कि वो गुस्सा गुस्सा गुस्सा. It's not actually necessarily कि वो threatened भी उस तरह से हो रहे हैं. दुख, अपनी कमजोरी कहीं पे हो, कहीं पे insecurity हो, वो भी गुस्से में निकलती है. गुस्से में निकलती Rather है। than, and for women exactly like you said, क्योंकि उसको गलत समझा जाता है, तो जहाँ पे गुस्सा निकलना चाहिए, जो पॉजिटिव गुस्सा है जिसकी बात महनूर ने की, जहाँ पे अपनी राइट्स के लिए या अपनी जहाँ कोई भी इनजस्टिस कहीं पे हो रही है, उस पे बात करती भी हैं, तो इट्स सीन एज गुस्सा। तो वो एक असर्टिव और अग्रेसिव में फर्क हम नहीं Exactly. करते। इफ अ वुमन स्पीक्स आउट कि ये मुझे गलत लगा है, हम कहेंगे वो देखो वो गुस्सा कर रही है, वो हॉस्टाइल हो रही है, वो अगर ऊंची आवाज में भी वो बात करे अपने अपने आप को सुनाने के लिए, बात करने के लिए, Exactly. तो इसका एक जेंडर एस्पेक्ट तो डेफिनेटली है। Definitely है। इसका, सॉरी, आई जस्ट वांट टू ऐड, आई थिंक जेंडर के अलावा, माहिर बिफोर यू गो ऑन, आई थिंक बहुत सारी हमारी जो assumptions होती हैं, so जैसे महनूर ने कहा कि फीलिंग थ्रेटन्ड, कभी कभी इट्स अ रियल थ्रेट एंड समटाइम्स इट्स आल्सो एन assumed threat, Assumed threat. बिकॉज आपकी पहले से जो बिलीफ्स अगर किसी चीज के बारे में हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा जो हायरार्कीज हैं हमारी सोसाइटी में, बड़ों को छोटे से, मर्द को औरत से, बॉस को कलीग से, हमारी उसके बारे में जो बिलीफ्स होती हैं, अगर वो भी उसके खिलाफ कोई चीज आती है तो हमारा गुस्सा आ जाता है। So part of the anger management is also to look back and not just be aware, उस पे I think मनूर अभी बात भी करेंगे about how to become aware of your anger, but also कि where is this anger coming from? Is it a legitimate reason जो कि वाकई आप threaten हो रहे हैं, आपकी कोई fundamental, आपकी mature जो need है वो वहाँ पे threaten हो रही है, और is it because you believe something, आपका कोई bias है, कोई assumption है, कोई cultural expectation है, उसकी वजह से आप पे गुस्सा आ रहा है, because आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, and we'll talk a bit more about that. So But just to point add is, a bit, it's a complex emotion. yeah, so just to add a little bit here, like Dr. Asha said, that especially in workplaces, since we're talking about those, what happens is that sometimes presumptions or assumptions, like for example, के ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, इनको तो मैं जो भी काम देता हूँ ये करते ही नहीं है. Yes. So if we have those preconceived notions in our minds कि मेरी तो कोई respect ही नहीं करता, something like that, so we're likely to express anger in a negative way because we're already riled up. हमारे दिमाग में already ये बात बहुत हमने exaggerate कर दिया है, not really based on proof completely कि हो क्या रहा है. So sometimes it's better to reflect कि actual situation क्या है, मैं क्या feel कर रही हूँ, and based on that मैं react कर रही हूँ उस बात पे या कर रहा हूँ. Yeah. So अगर हम बात करें कि expression की उस पे आता है, and you're a woman in the newsroom, या you're even if you're a man in the newsroom, तो उसमें कभी ये होता है कि people are बिल्कुल disagreeing with you and you're feeling very angry, तो उसको express करने का तरीका क्या है? Like one of the tactics that I thought मैं इस्तेमाल करूँगी, I don't know वो कितना successful है. Like मेरी एक managerial role है. So if somebody does something जो मुझे नहीं पसंद आता है, एक sub editor या एक reporter, right? Depending on their personality, and उन्होंने कोई भंड मारा है, some mistake. So I talk to them. एक तो वो पहले से ही डरे हुए होते हैं. And then I'm like, I'm actually upset with you. I'm upset with what this thing was, ये जो हुआ है. And I'm saying it to your face. मैं ये भी कहती हूँ कि मैं आपको आपके मुंह पे ये कह रही हूँ कि ठीक नहीं है, और ये इस वजह से ठीक नहीं है, और ये क्यों हुआ था, ये हमें diagnose करना पड़ेगा. But I realize कि power dynamics भी जो आती हैं, if I'm a boss and I have to be so careful about expressing my anger, and I'm not often able to do it because newsrooms में जब आप mistake करते हो वो on air चली जाती है. I mean you can have बहुत ही consequences होते हैं mistakes के, और ऊपर से जो है cascade effect होता है कि ऊपर से डांटे जो हैं, like it's like a raining down bricks on you, so it affects everybody down the line.
But I found that even if I tell people, it was maybe too Western a concept कि मैं बताऊं कि I am upset with you, people would just be like, oh, what is this? So I realized when I look around and मेरे जो team में discussions होती हैं, we found there was a lot of passive aggressive expression of anger. So my question is कि अगर आपको गुस्सा feel हो रहा है, people are like पानी पी लो, 5 count to 10 or something, which never works. In fact, it festers. So if I go to that person, तो मैं उस बंदे से किस तरह बोलूं? अच्छा, वो फिर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, ये मैंने तो नहीं किया, ये उसका मिस्टेक था. अच्छा, जितना बंदा डिफेंसिव हो रहा है तो मेरा उतना ही मीटर घूम रहा है. तो एक तो ये हाउ डू यू टॉक टू समबडी जिसका गुस्सा आपको आ रहा है या कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, उस पे आपने रिस्पॉन्ड कैसे करें? अगर मैं चीखना शुरू कर दूं, मेरे टीम मेंबर्स को क्या करना चाहिए? और दूसरा, ये पैसिव अग्रेसिव एंगर, ये क्या होता है? Okay, I can start it off, Manur, और आप you can add to it, ठीक है? अच्छा, एक तो जो आपने बात शुरू की थी माहिम, I just want to comment on that कि आपने कहा, पहले आपने कहा कि अगर disagreement होती है या मुझे कोई बात पसंद नहीं आ रही होती या कोई गलती होती है, तो I think उसमें भी differentiate थोड़ा सा करना जरूरी है कि कभी-कभी disagreement is not a bad thing necessarily, right? मतलब आपका कोई कॉलीग का कोई ओपिनियन है या आपका ओपिनियन है, तो देयर कैन बी अ डिसएग्रीमेंट कैन बी वर्क थ्रू. अब वो अगर मिस्टेक है, क्रिटिकल मिस्टेक है कि कोई चीज ऑन एयर चली गई है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट इशू है. सो कभी-कभी होता ये है, एंड आई जस्ट वांट टू कमेंट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज हैपनिंग विद यू और इन योर न्यूज रूम, लेकिन कभी-कभी जब हमारी एक डिफॉल्ट एक हमारा एक तरीका बन जाता है टू डील विद एंगर, जिसमें वी नॉट एक्चुअली थिंकिंग थ्रू कि ये वजह से एंगर हो रहा है, यहाँ पे इस वजह से हो रहा है, यहाँ पे ये है, तो वो एक ही तरीका आता है हमारा, चाहे वो एक मिस्टेक हो, चाहे वो सीरियस मिस्टेक हो, चाहे वो बड़ी मिस्टेक हो, चाहे वो सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट हो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता है टू दिस सिचुएशन. सो वन ऑफ द थिंग्स मिसाल दे. नो, सो फॉर एग्जांपल आपकी गलती हो गई है, कोई गलत इंफॉर्मेशन चली गई है ऑन एयर. नाउ दैट्स अ सीरियस मिस्टेक, राइट? कि कोई बिल्कुल एक गलत इंफॉर्मेशन हो गई है, यू नो, कोई सर्वाइवर का नाम चला गया है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चली गई है. नाउ दैट्स अ सीरियस मिस्टेक. ऑन द अदर हैंड आप ये कह रही हैं कि भाई ये हमें इस पे स्टोरी करनी है, किसी और ने कहा नहीं हमें इस पे स्टोरी करनी है, राइट? अब ये बहुत मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, राइट? एक डिसएग्रीमेंट है, योर आइडिया माइट बी अ बेटर आइडिया, और यू एज अ मैनेजर स्टिल हैव द डिसीजन मेकिंग पावर, but it doesn't necessarily mean, it's still not the same as a mistake that's gone on air. लेकिन आपका डिफॉल्ट तरीका एंगर के साथ वही होगा कि भाई मेरे साथ डिसएग्री भी किया है तो मैं उसी तरह से रिएक्ट करूंगी, और जब एक मिस्टेक होगी बहुत बड़ी तो वहां पे भी मैं करूंगी. So that becomes problematic. And I'm not again talking about you. I don't know how you are. My volume shouldn't be the same for all kinds of mistakes. Volume, the body language, या आप कह भी क्या रहे हैं. So for example, in workplaces, I have seen people जहाँ पे not just in newsrooms, वहाँ पे तो खैर बहुत ही I think वो आप लोग का इतना fast pace चलता है, जहाँ पे छोटी भी मिस्टेक हो तो आप रिएक्शन जो है वो मैनेजर का वही है कि क्या मुसीबत है, यहाँ पे कुछ ठीक होता ही नहीं है, यहाँ पे तो इंसान बात नहीं कर सकता, चाहे वो इतनी बड़ी बात है चाहे वो इतनी सी बात है. फिर होता क्या है माहिर, कि nobody takes the management seriously or that colleague seriously, क्योंकि आप छोटी सी बात पे भी आप सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बड़ी बात पे भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, आपकी आवाज वॉल्यूम भी हाई हो रही है, आप अगर गाली गलौज पे आ जाते हैं तो वो भी छोटी चीज पे भी आ रहे हैं, बिकॉज वो बिल्डअप कर रही है. ऑफन जो ट्रिगर होता है एंगर का वो छोटी सी चीज होती है. यू माइट हैव एन इशू दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अ प्रोफेशनल वर्कर, लेकिन आपने उस पे एंगर नहीं शो किया, आपने एंगर शो कर दिया क्योंकि पेंसिल गुम गई. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. In fact, just to cut you, there is a very interesting comment that has just come in from Rehan Haider. और Rehan Haider कहते हैं, there is Facebook पे post हुई है, there is a lack of professional and trained journalists working in the media houses and newsrooms. They turn their weaknesses into anger. Similarly, the trend of journalists in the same newsroom get angry because they have to deal with untrained and bogus teams to take professional work. I think ये बहुत अच्छा point है कि, and I often feel कि because journalism training कुछ चीज़ों पे सलाहियत की बात होती है, एक बंदा वो काम नहीं कर पाता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन इन न्यूज़ रूम कि वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रही है या मिस्टेक्स जा रहे हैं. An untrained sub editor can wreak havoc, so then their line manager वो मुस्तकिल नाराज़ हो रहे होंगे. तो but I think हमारे पहले भी एक वर्कशॉप में महमूर ने कहा था कि फिर बुलिंग वाली जो वर्कशॉप है उसमें अगर आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आपको काम नहीं आता है तो मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक बंदे की सलाहियत नहीं है उनको ट्रेनिंग वो दिलवाएं ताकि वो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो.
So basically, I that just was want to that. add to your comment as well. ये Dr. Asha ने जो एक बात की थी अभी कि anger can be a cover up or an underlying emotion. That I think is very important. जो अभी आपने रेहान का comment बताया कि कहीं वीक जो वो कह रहे हैं वीक इंडिविजुअल्स एंगर से कवर अप करते हैं, ये तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल थियरी में भी होता है कि अंडरलाइंग आपके अनरिजॉल्व जो भी इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप उनको मास्किंग इमोशंस यूज करते हैं, जिसमें एंगर इज वन ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि जैसे डॉक्टर आशा ने भी ये कहा कि मर्द हजरात खास करके दे आर नोन टू यूज एंगर एज अ कवर अप इमोशन फॉर अ लॉट ऑफ emotions that they feel otherwise, because anger is an accepted emotion for them. Anger उनके लिए एक्सेप्टेबल है, उनको दुनिया में सोसाइटी में उनको एक्सेप्ट किया जाता है एंगर के साथ। वो रोते हुए आएंगे तो शायद उनको बोलेंगे कि तुम तो मर्द ही नहीं हो, तुम तो यही नहीं हो, तो उनको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे। दूसरी बात माहिम, when you mentioned के how do I say this to my employee, how do I say this to my colleague without being negatively angry, so I think the problem here is the same thing, that assertive versus aggressive. Okay, so when you're being assertive, what you're doing is you're standing up for yourself, you're conveying what you want in a polite and respectful manner, versus being aggressive, that you're मुझे attacking the other person. जैसे जुमले for में मिसाल example, दें। जुमले में मिसाल ये होगा कि अगर किसी ने आपको वो काम दिया जो आपको नहीं चाहिए था, इन एन आइडियल सिचुएशन अगर ये हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुमसे तो होता ही नहीं है, तुम तो हो ही बेकार, तुम तो ये हो, तुम यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर अटैकिंग द अदर पर्सन, यू आर बीइंग वर्बली aggressive with the other person. What you could be is that I wanted you, or I would like this, versus this is being assertive कि I would have liked you to do it this way because this is the right format, but let's work on that. Like you said, this is a very Western concept. It is, it could be, West में भी मसले होते हैं, वर्क प्लेसेस में बहुत ज्यादा होते हैं मसले. Because recently, in fact, one of my friends here has had to deal with a very aggressive client. She's in marketing and she's just losing it. Her mental health is in shambles because of that. बाहर भी ये मसले होते हैं, but you have to really see how you're expressing that disagreement or anger or whatever it is that you're feeling. आपको खुद 10 seconds लेके सोचना पड़ेगा, मैं इस वक्त सोच मेरे दिमाग में है क्या? Is this a misunderstanding? Is this a disagreement? Is this what is going on? Then you have to express it in that way. And वही वाली बात है कि aggressive जब आप हो रहे होते हैं, which is not a very good way of expressing anger, तो आप अटैक करने पे आ जाते हैं दूसरों को. जब आप असर्टिव हो रहे होते हैं तो आप मतलब अपने आप को पहले रखिए, अपनी बात कर रहे होते हैं विदाउट ह्यूमिलिएटिंग और अटैकिंग द अदर पर्सन. बिकॉज जिन वर्क प्लेसेस में अग्रेसिव ज्यादा लोग हो रहे होते हैं, वहां पे फिर नेगेटिव उसके आउटकम्स ये हो जाते हैं कि टर्नओवर रेट ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी फ्लैट हो जाती है, लाइक यू सेड इट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट. तो वो पूरा वो साइकिल गलत बना हुआ है. अगर वो साइकिल को कहीं तो टूटना है, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर बना हुआ है, वो पावर उसमें बना हुआ है डायनामिक पे. एंगर पावर टेसल का भी एक आउटकम होता है, जैसे उनमें अथॉरिटी दिखाने के लिए भी लोग करते हैं. लाइक यू सेड कि मेरे ऊपर से वो गुस्सा कर रहा है, उसके ऊपर से वो गुस्सा कर रहा है, तो अगर ये काम चली गुस्से पर आए तो इसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा नेगेटिव इमोशंस अराइज हो रहे हैं. Yeah. Can I add to that also, Mahim? I want to take that comment जो आपका था कि जब तक मैं चीखूं नहीं तो काम नहीं होता. I think very often ये पैटर्न बन जाता है. I was just saying to my daughter the other day कि कोई काम मैं धमकी दिए बगैर कर सकती हो, because at a point कि जब तक मैं ये नहीं कहूँ कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो तब तक नहीं होगा. The problem is कि ये पैटर्न हम खुद कई दफा बना देते हैं, and I see that, in this example I also stepped back वो with my daughter. रीइंफोर्स हो जाता है. बिल्कुल रीइंफोर्स हो जाता है कि जब क्योंकि आप इतना ज्यादा एक तरीके से डिफॉल्ट आपका तरीका बन जाता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी पर्सनल लाइफ की भी तो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं. When you're at work or you're anywhere, तो आपका पर्सनल, आपका स्ट्रेस, आपका घर, आपकी फ्रेंड्स, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, सब चीजें उसमें आ रही होती हैं. तो वो बिल्ड अप होता है, एंड यू हैव अ डिफॉल्ट वे ऑफ डीलिंग विद इट, एंड पीपल गेट यूज्ड टू इट. तो हम एक तरह से लोगों को आदी भी कर देते हैं अपने इर्द गिर्द कि मैं इसी तरह कहूंगी और इसी तरह से रिस्पॉन्स आएगा. तो फिर जब आप उससे कम करते हैं, आप असर्टिव होते हैं, लाइक मनूर कह रही है, या आप आराम से बात करते हैं, nobody takes you seriously. Again, gender dynamic में थोड़ा सा यहाँ पे करूंगी कि women who are managers very often feel कि वो जब तक aggressive नहीं होंगी तो उनकी authority को भी undermine किया जाएगा. Because as women आपकी इतनी conditioning है कि आपने अच्छे तरीके से बात करनी है और ये करनी है. Nobody takes it seriously till you take on that more masculine role sometimes.
So एक वो भी जेंडर का है. I wanted to comment quickly on जो टेक्निक जो एक महानूर ने भी assertive वाली जो बात की है कि अपनी लैंग्वेज को चेंज करना थोड़ा सा. उसके अलावा समटाइम्स आई थिंक हमारे यहाँ पे ऑफ कोर्स वही ट्रेनिंग वाली बात जो रेहान की भी है कि क्योंकि कोई ट्रेनिंग इस पे नहीं होती ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो हमारे कोई नॉर्म्स भी सेट नहीं हुए हुए. आई थिंक इट वुड बी एक्सीलेंट इफ न्यूज रूम्स कुड कम अप विद जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नॉर्म कि आप बैठ के कहें कि भाई जब गुस्सा आता है या डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, व्हाट शुड वी एज अ टीम डू, किस तरह Good से luck. बिकॉज क्योंकि हम इतना चीखते हैं, सब चीखते हैं, everybody is getting frustrated. I don't like screaming, you don't like being screamed at, you don't like आपस में. What is it that we can actually do कि हम अपना express कर पाएं and it's taken seriously? अगर नहीं होता तो लास्ट आई थिंक इस वाले कमेंट पे आई वुड आल्सो से आई अंडरस्टैंड कि कभी-कभी जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी असर्टिव. अब आपका इस वक्त एक चीज जानी है, यू विल बी स्क्रीमिंग, गेट इट ऑन एयर, टाइम हो गया है, व्हाटएवर इट इज. सो अगर वो भी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ठीक है, ये इस वक्त का एक टेम्पररी रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉट एक्चुअली एंगर दैट कांट बी टॉक्ड अबाउट लेटर और रिजॉल्व, बट वो if that's the only way of being, I think मैं उस वाले पॉइंट को I want to emphasize कि जो हमारी default हमारा एक पैटर्न बनता है of dealing with anger and expressing anger, that becomes very problematic. If you're seen as the one person who starts screaming या गालियां देना या all of that, then anything else that you try will not be taken seriously. और फिर वो proportionate कभी भी नहीं रहेगा. If we have a range of ways of dealing with anger, फिर कभी कभार चीखना, कभी कभार losing your temper is actually okay. Because we're human, right? Okay, but you can only say that अगर आपके और भी आपकी भी variety है. ठीक है. So we have a couple of questions, and they're in Urdu, and I think मौजूदा हालात में जहाँ मीडिया इदारों में कम वसाइल के बावजूद काम का इजाफी बोझ लाद कर कंपनी अपने employee से तवक्को करते हैं, तो okay, so that's the work stress that has come in, and एक और है from मतियुल्लाह खान कि गुस्से की हालत में या in under pressure सूरत हाल में एक बंदा न्यूज़ रूम में किस तरह बेहतर हालात में काम कर सकता है और इन हालात को कैसे बेहतर किया जा सकता है. I'm wearing the wrong glasses for this. So also जो थोड़ी सी जो घर के आप स्ट्रेस की बात कर रही थी, one of the things that मैंने इसकी सेशन की ओपनिंग पॉइंट सोची थी, जो मेरे लिए बहुत आई फील इज हैपनिंग मोर एंड मोर मेरे करियर में, कि जर्नलिस्ट का काम होता है कि दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया के मसले मसाइल जो हैं, आप उनसे you're just focused on that, ठीक है, and you're always facing corruption की stories, बेईमानी की स्टोरीज और एक ब्रोकन सिस्टम की स्टोरीज. तो वो आप जिस चीज को कवर करनी आपकी बीट है, वो फ्रस्ट्रेटिंग है. और मुझे लाइक फॉर एग्जांपल मैं कराची पे काम करती हूँ, तो कराची में फ्लडिंग हो गई, सिटी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो आपको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा फील होता है. सो यू कम your bunyadi thing is looking at problems. I think even शायद psychologists में भी है कि you're dealing with people with problems. And so the basis of the work you're doing is anger. Because even if आप एक reporter हैं और आप जाके sort लेके आते हैं, ये government बिक गई, like frustrated people on the street, you're actually in facing in the firing line of people getting angry, or also people get angry at media people as well. In fact, media के हवाले से online abuse भी बहुत सारा I think journalists face कर रहे हैं. तो आप जो भी जैसे भी स्टोरी कर लें, उस पे कोई ना कोई ट्विटर पे उस पे जो है ना they'll crap on it, it's not good enough. So आप किसी के मेयार पे नहीं उतर रहे हैं. आपकी जैसे मतियुल्लाह साहब कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड somebody else said कि वसाइल कम है. So you're working on this under pressure job. So the nature of the job is looking at things that make you as a human being angry. So are we not internalizing all of this anger? Like what is that? Because some days, there are no days I feel good. Like एक murder story को आपने बहुत अच्छा cover कर लिया, and you give yourself a pat on the back, हाँ यार, but somebody died, it's this weird warped
थिंक, तो जब आप लोग थेरेपी कर रहे थे, डिड यू फील दिस वाज कॉमन विद ऑल जर्नलिस्ट के हम गुस्से वाले ही काम कर रहे हैं? You know, I think it's Dr. Asha. I'll just like start and then you can add on. Yeah, no, no, I no think problem. as a person, it varies because I feel that how you take information, how you relate to it, how you express it, इसमें बहुत सारे person to person बहुत फर्क आता है, and the key is self-awareness. Okay, when you're talking about anger specifically, आपको एक चीज करनी चाहिए, वो होती है anger inoculation. Okay, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि essentially what caused you to be angry. Okay, so what happened right before you became angry and what exactly was the trigger for your anger? Because it couldn't just be the fact that like Dr. Asha said कि किसी ने फाइल आपको थोड़ी देर से पहुंचाई या गलत पहुंचाई या कोई ऐसी छोटी सी बात है और आपने you just it blew out of proportion, आपने बहुत ज्यादा उस पे कर दिया. तो you really have to look inside and आपको देखना है कि कहाँ पे मेरा ट्रिगर है, क्यों मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इस इंसिडेंट से बिल्कुल पहले क्या हुआ था. Maybe it could be something like you just read an upsetting story, or you're dealing with something really upsetting on hands as a journalist or as someone who's working in the newsroom. But even then, one needs to and has to be self-aware enough to work on their expression of anger and being upset. Because एज थेरेपिस्ट, जैसे आपने कहा, हमें हमें तो बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलता है, बट हम उसको उस वे में रिएक्ट नहीं करते बिकॉज वी आर ट्रेन्ड टू टेक दैट इंफॉर्मेशन एंड गिव दैट एम्पैथी. ठीक है, सो जब वो एम्पैथी की जब मैं बात करती हूँ तो वो आप खुद को भी दें. जब आप सेल्फ अवेयर हो रहे हैं तो अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन दैट इज कॉजिंग यू टू एक्ट आउट और express anger in a way that could harm others. यार Right? माहौल, जब जब मीटर घूमता है वो मोमेंट में घूमता है, और जो किसी ने कोई बात गलत कर दी कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाली कि ये चीज इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, So तो they मेरे पास threaten your टाइम नहीं है. identity. वो वही वाली बात है, यहाँ पे आप देखो ना, they are threatening your mature needs जो आपकी हैं, आपकी identity, आपकी respect, उस पे बात हो रही है, and then you are reacting to it, right? That is what मैं we क्यों talked नहीं about. रिएक्ट करूं, किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की है. डॉक्टर आशा, आप बताएं क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? करें रिएक्ट. आई थिंक यू शुड रिएक्ट. आई थिंक जब आपको लगे कि भाई इनजस्टिस कहीं पे फील हो रही है या गलत है, आई थिंक द रिएक्शन इट्स ओके टू रिएक्ट. Reaction is needed. Exactly. अच्छा ठीक है, there are very जिस तरीके often से. there are times, but there are times, and I think वो वाली बात है कि कभी आप रिएक्ट कर रहे हैं where there is actually no need to react. आप रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप घर से लड़के आए हैं, ओके, या वो आप तो रिएक्ट करते कर रहे हैं. हैं स्टोरी पे, राइट, और आप स्टोरी पे रिएक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपकी कोई और स्टोरी रिजेक्ट हुई है, तो आप इस वाली भी Yeah. स्टोरी से, तो कई दफा वो ओवरलोड इफेक्ट होता है जो एक्चुअली ठीक. डिस्प्लेस होता है. तो Yeah. कभी कभी तो दैट्स वेयर द सेल्फ अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट आई थिंक वहां पे रुक जाता है, टू अंडरस्टैंड कि मेरा इस वक्त रिएक्शन, जैसे मानूर ने कहा, इज इट एन ओवर रिएक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स और इज इट अ रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. अगर तो वो कहीं और से गुस्सा आ रहा है, देन डील विद द बिगर सिचुएशन. अगर वो गुस्सा वहीं पे आ रहा है, देन आई थिंक रिएक्ट बाय ऑल मींस, एंड लाइक आई By सेड, all कभी means. कभी Yeah. you react in ways that are not appropriate. I want to go quickly, जो आपने भी बात की थी माहिम, कैसे यहाँ पे तो कुछ रीजन उन्होंने दिए कि भाई वर्क का ओवरलोड होता है, अंडर प्रेशर भी आप आते हैं, so part of it is the work environment. So what you said, is it journalists, are they generally angry people? आपका एक सवाल था कि therapist, right? I think there is a lot of negativity that journalists deal with, a lot of it, और वो थेरेपी में नजर भी आता था कि भाई हमें ब्रेक ही नहीं मिलती, हम न्यूज रिपोर्ट्स करते चले जा रहे हैं. बट आई टेल यू वन थिंग, एंड आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट के लिए सोचने के लिए, कि वेयर एज एंगर है, वेयर एज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा काम में, कंटेंट में नजर आती है, बट देयर नॉट ऑल जर्नलिस्ट्स आर एंग्री पीपल, एंड देयर नॉट ऑल पीपल जिनका गुस्सा उस तरीके से निकलता है. एंड व्हाट्स द डिफरेंस इन अ वे इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? उस एंगर को कई दफा चैनल जर्नलिस्ट बहुत पॉजिटिवली करते हैं. आई सीन दैट विद माय ओन क्लाइंट्स. आई हैव आल्सो सीन पीपल जिनके साथ हमने थ्रू थेरेपी वी वर्क टुवर्ड्स दैट, कि ठीक है वो है गुस्सा, आप मर्डर स्टोरीज कर रहे हैं, आप जैसे आपने कहा गवर्नमेंट की स्टोरीज, आप रेप की स्टोरीज, आप चाइल्ड रेप की स्टोरीज, आप क्या क्या स्टोरीज नहीं कवर कर रहे हैं जहाँ पे आपको इनजस्टिस नजर आ रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम वो उस गुस्से को लेके दे नॉट ड्वेलिंग ऑन इट, दे नॉट सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम. And that doesn't make them inadequate bad journalists. आपने अपना काम किया, आपने रिपोर्ट किया, आप जो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लिमिट्स माहिम, as anyone, as psychologists, as activists, as journalists, we do have to recognize हमारे काम की लिमिट.
एंड उस एनर्जी को आप पॉजिटिवली भी कर रहे हैं, आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, रिकग्नाइजिंग द वर्थ ऑफ योर वर्क, बट एट द सेम टाइम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दैट कंटेंट, उसको शायद मैं एम्फसाइज काफी नहीं कर सकती. एंड आई नो इट्स हार्ड, आई नो कि आप लोगों के hundreds of WhatsApp groups होते होंगे और क्या Yes. क्या होता होगा, right? But I still think, and I know कि हम उसी situation पे आ रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट कर सकती नहीं है, हमारे वसाइल हैं, क्या हैं, but I Yeah. think finding small ways. I know journalists जो कहते हैं हम बंद कर देते हैं फोन, ठीक है, हम नहीं रहते अप टू डेट, हमें Yeah. 24 घंटे न्यूज नहीं मिलती, लेकिन हम बंद कर देते हैं because your mind needs it. It's like your Needs phone it. needs to charge. It's like Yeah. your body needs to sleep. Your mind needs to rest. And I think one reason जो इतने गुस्से में कई दफा होते हैं journalists is because वो break नहीं लेते. So Yeah. that would be a very strong recommendation for me as management and as journalists individually. कि हमें पता है workload का issue, पता हमें पता है वसाइल कम है, हमें पता है क्या क्या personalities होती हैं, हमें पता है high pressure होता है, but Yeah. आप break लेके अपने आप को इतना refresh कर सकते हैं that you can deal with it. आई नो पर्सनली कि अगर मैं रात को नहीं सोई और मैंने एक हफ्ता बहुत काम किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरा मूड, मेरा जो फ्यूज है बेसिकली वो बहुत शॉर्ट होगा, राइट? एंड आई नो व्हेन आई एम रेस्टेड एंड आई हैव जस्ट बीन आउट एंड आई हैव मेट फ्रेंड्स एंड Yeah. तो मेरा वो ऑटोमेटिकली मेरी पेशेंस लेवल थोड़ी सी कम होगी और वो रिफ्लेक्शन की एबिलिटी भी मेरी ज्यादा होगी तब. जो इनॉक्यूलेशन की जो बात की मानूर. So हाँ, just ये like very quick, inoculation, एक बात मैं add करना inoculation in चाह रही हूँ. Urdu. Can you just say like what inoculation in Urdu feel like? You can बेसिकली describe it. गुस्से को आप समझें कि समझना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसके अंदर आप देखिए कि क्या हुआ था उससे पहले, क्या उसके बाद मैंने क्यों रिएक्ट किया राइट बिफोर दैट, उस बात को डाइसेक्ट करके उसको समझ लें. अच्छा, एक और बात मैं इस पर ऐड करना चाह रही हूँ कि प्लीज ये ना समझें कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए. अगेन, हम आपको ये नहीं समझाना चाह रहे क्योंकि गुस्सा करना जरूरी है. जब आपको कोई आपकी इज्जत पे, आपकी आइडेंटिटी पे, आपके राइट्स पे बात कर रहा है तो आप गुस्सा करें, बट अगेन बी माइंडफुल ऑफ दैट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर दैट यू आर यूजिंग, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी है, आपको डिफाइन करता है. तो जब आप कह रहे हैं कि उसने मुझे ये कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम you're incapable, you're that person has no right to speak to you like that, चाहे वो जो भी हो. ठीक है, वो आपका बॉस हो या आपसे आपका एम्प्लॉय हो, जो भी हो, उनको किसी तरह बदतमीजी करने का कोई राइट नहीं है. दिस इज वेयर यू नीड टू बी असर्टिव और यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. तब आपने उस रिएक्ट जरूर करना है, गुस्से को पॉजिटिवली ले जाना है इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द अदर पर्सन इन रिटर्न. आई मीन आइडियली, लेकिन कभी कभी आप कर भी देंगे, आप बोलेंगे तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले, एंड दैट्स ओके, बिकॉज कभी कभी यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ इन दिस वे. बट वही वाली बात है कि बिल्कुल गुस्सा करना ये हमारा गोल नहीं है. और हमें जब एज जर्नलिस्ट एक स्टीरियोटाइप भी दिया हुआ है मीडिया वर्कर्स को, हर वक्त गुस्सा दिखाना है, हर वक्त एक उसमें रहना है कि लाइक बहुत काम है, बहुत काम है, वाकई रिसोर्सेस कम है, लेकिन आप द कल्चर जो एक बन गया है वहां पे, आई थिंक उससे भी ज्यादा उनकी जो बिहेवियर्स है वो डिफाइन हो जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज रिएक्टिंग इन दिस वे. डॉक्टर आशा ने जो बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें एज साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है कि ये जो थेरेपिस्ट वाला चश्मा है ये ऑफिस में छोड़ के आओ. क्यों छोड़ के आओ? क्योंकि ये अगर पूरी जिंदगी हम अपने पूरे घर में अपने पार्टनर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ये लेके घूमेंगे तो इट्स अ वेरी बिग लोड टू कैरी. द सेम एज जर्नलिस्ट्स, you have to learn to leave this at the office. I know work never stops for you guys, but एक healthy sign होती है, healthy functioning की, कि you are able to maintain or try to strike that balance. I also feel that it's interesting जो ये कल्चर की बात कर रही हो माहनूर, के हम कहते हैं कि न्यूज़ रूम में मैं खुद कहती हूँ कि भाई देखें, हम एक टीम है और गुस्सा आता है, उस वक्त लड़ाई होती है, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, 5 मिनट बाद हम चाय पी रहे हैं एक दूसरे के साथ. So yes, I've also seen people forgive each other. लोग लचक भी दिखाते हैं, एक कमराडरी भी बहुत है कि यार ये मेरा न्यूज़ रूम का एक वो साथी है. जो जर्नलिस्ट हैं, जब मसले होते हैं, they get together and help each other. But one of the things that I find, like somebody, I won't tell you when and where and who, was extremely rude to me, and I received an apology from them yesterday, because उसके बाद उनका काम जो भी था, I did it normally, and उसके बाद that person was like कि भाई पहली दफ़ा जब हमारी बात हुई थी
I was very rude to you, उसपे I was very angry, but because they were an important person, मुझे कुछ मैं उसकी ना complaint कर पाई ना मैं उनको कुछ कह पाई. Yeah. And I was stunned, and I realized, and आज ही I myself issued an apology because एक हमारे जो subordinate someone under me was really angry about something. And one of the things about anger also and pain, I sometimes wonder is that pain एक बंदा जब खफा होता है किसी ने किसी से बदतमीजी की है तो if everybody else is just dismissing it, if you acknowledge that person's pain and you say I understand you're angry, मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ हुई है उस पर तुम्हें गुस्सा आया है और तुम्हें दुख हुआ है और तुम्हारे साथ बदतमीजी की गई है, then I find उस बंदे का थोड़ा सा जो है ना they become more receptive to working with you on fixing the problem. But apologies, I don't know, हमारे culture में माफी मांगना एक तौहीन समझी जाती है. Yeah, it's a threat to the ego. Yeah. अच्छा, so there's that, and then we have some comments coming in. Ji, Dr. Asha. Yeah, I'm just going to say, I think the power of apologizing and the reflection, एक जो reflection की बात की महानूर ने वो होती है कि भाई आप एक step पहले गुस्से से पहले you take a second अपने reaction का, but उसके अलावा जो आपने बात की, the other self reflection can happen afterwards too. So I think there is a lot of power in that कि आप realize कर लें कि भाई मैंने उस वक्त जो किया था वो वाकई that takes a lot of courage. Exactly. And ये कि ठीक है apologize आपने कर दिया, acknowledge कर लिया, it's actually easier to work on it when you really mean when you really realize कि ये मैंने over boundaries को cross कर दिया या overreact कर दिया. That's one way definitely of dealing with that. And दूसरा माहिर self reflection वाला कि भाई किसी ने जब बात की तो just that second to understand where that person is coming from. It can also go a very very long way. हाँ कि सिर्फ आपने उसकी बात सुन ली. Apology के अलावा जो cultural हमारा एक है वो defensiveness है. Maybe it's not purely a cultural thing either. कि apology तो दूर की बात है, हम इतना ज्यादा अपनी बात को defend करने में वही ego जहाँ पे बीच में आ जाता है कि नहीं इसलिए you can give all of that, अपने points आप express कर सकते हैं if you just take a minute, step back and say okay I'm sorry मैंने इस तरह से react किया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और whatever, and then आप वही बात कहें. But defensiveness basically shuts the other person's ears. अगर मैं defensive होंगी तो मेरे जो बहुत valid points होंगे, मेरी बहुत valid critique होगी, feedback होगा, you will not listen to it. You will not listen. क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी ना, मैं सिर्फ defend कर रही हूँ, तो फिर आप भी defensive mode में आ जाएंगे. So no one's actually listening. That's one of the things with anger. Absolutely. And इसमें एक और बात मैं add करना चाहती हूँ कि because it's very important to now talk about, I know there are comments coming in, जल्दी से ये वाली बात भी wrap up कर देते हैं कि what do you do अगर आप, if you're someone who struggles with expression of anger, कि for example आपको लगता है कि you tend to lose it, you tend to lose your temper more than often. I do tell my clients usually to try this out and it works usually for them. I'm like, imagine yourself, आप खुद देखें कि आप receiving end पे हैं and just आप आंख बंद करके ये देखें कि आपके सामने एक movie चल रही है where this person is speaking to you like that. आपका mirror reflection लाल हो रहा है गुस्से में, आंखें दिखा रहा है, gestures कर रहा है कि दफा हो जाओ, ये करो, वो करो, लाल, you know, like that language, that body language and those eyes, the turning red of the face, और वो इस तरह उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, वो आपको इतना गुस्सा दिखा रहा है. Would you want to work with this person on a daily basis? Oh, I wouldn't want to work with myself now. So, you know, what this is a form of self-reflection. You have to see how you look in the mirror, for example, if you're doing this, because the other person, कुछ दिन वो terrified होगा आपसे, फिर उसकी respect कम होती जाएगी, productivity कम होती जाएगी. You get what I'm saying? You don't want to be going to that workplace every day where you're treated like that. So that is one of the things that you can work on. एक अभी comment आया है which is very interesting कि वही माहिम वाली बात कि we are dealing with sad stories every day. How do you deal with that? So you know it's a part of your job. I'm not saying suck it up, stick with it, because ये गलत जवाब है, क्योंकि आपको पता है हम थेरेपिस्ट को एक चीज हो जाती है compassion fatigue. ये जो हम compassion दिखा के ना हमें burnout हो जाता है कि हम बार बार इतना compassion नहीं दिखा सकते. Similarly, oncologists जो होते हैं, जो high risk cancer patients के साथ काम कर रहे होते हैं, on a daily basis they see deaths, everything. उन पे भी it takes a toll on them, just like you guys. और उनके साथ भी यही होता है कि they can't, बहुत heavy हो जाता है उनके लिए. You have to have your outlets. You have to take a break. Like Dr. Asha said,
आप लोगों को डीप ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, थेरेपिस्ट से बात करनी है. CEJ में तो आपके पास फ्री थेरेपी है. Free You have therapy. free therapy है, and you know you have to be aware कि अगर if it's taking a toll on you, you have to step back. You have to take a step back because आपको पता होना चाहिए कि too much of it is, and if it's getting to you, maybe there's an underlying personal reason for it also. Because बहुत सारे लोग होते हैं who are able to maintain that uh, you know, like separation. वो compartmentalize कर लेते हैं कि ये workplace है, ये घर है, ये वो है. लेकिन if it's taking a toll on you, then something underlying, कोई unresolved conflict है जो कि इन दुखी कहानियों की वजह से वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है. It's finding its way out. या unresolved trauma है. Yeah, और वो exactly. trigger कर रहा है. A lot of stories are triggers for journalists because वो उनका Absolutely. past, उनका बचपन, उनकी जिंदगी, relationships, कोई ना कोई चीज. Wow. एक आपका जो over, जैसे हम कहते हैं emotional load होता है कि वो continuously आप कर रहे हैं उसकी वजह से, and you're not taking a break, तो वो कहीं पे outlet नहीं मिल रहा, वो भरी जा रही है ना. ग्लास है, आप भरते जाएंगे, किसी ना किसी पॉइंट पे वो overflow करेगा, right? Sure. या फट जाएगी. तो एक तो वो चीज है. The other, as Mahnoor said, is also कि वो एक personal trigger है. I want to just add one thing to जो Mahnoor ने relaxation और therapy और इन चीजों की बात की. I think with all my clients, break की भी जब हम बात करते हैं, तो it's extremely important कि हम इस चीज को underestimate ना करें. The power of fun, the power of laughter, What's that? the power of relief. Exactly, what is that? I think that's really important. I think literally with every client जो कि workload stress के आए हैं, I've asked them, what do you do for fun? And it is amazing how very often journalists will not have an answer for it. Yeah. कि हाँ हम कुछ और कर लेते हैं, हम अपनी डेवलपमेंट कर लेते हैं, हम कोर्सेज ले लेते हैं. That's not fun. That's not fun. Yeah. ठीक है, वो काम से हटके है. ठीक है, आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ भी करते हैं. That's very nice. It's relaxing in a whole other way. But when do you laugh? When do you let go? When do you say, अच्छा मैं even music या कोई film या कुछ वो देख रही हूँ जहाँ पे I'm actually enjoying it, not just to distract myself, but when I'm having fun. So I think जो balance की जो महनूर ने बात की, it's not just a balance की personal life and workplace. It's a balance, positive activities, balance in terms of relaxing activities, balance in terms of fun activities. ये एक हमारा इंसान होने के नाते this is natural. We need it. Yeah. Just और like हमें we need लगता है अगर हम exercise. डिप्राइव करें खुद को तो हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं. कोई हार्ड वर्किंग नहीं है if it's taking a toll on you, बिल्कुल, right? I mean, बिल्कुल, yeah, बिल्कुल. यहाँ हम गिल्ट महसूस करते हैं yeah, कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं. लॉट ऑफ जर्नलिस्ट से दैट कि दुनिया, और वो क्योंकि डिप्रेशन में आपको नेगेटिविटी इज लाइक द इज व्हाट यू heightened, सीइंग yeah, अराउंड यू, राइट? इट्स सो हाइटेंड. तो उस वक्त कोई फन या कोई इस तरह की चीज करना इज आल्सो देयर, इट्स गिल्ट इंड्यूसिंग. yeah, सो इट्स एक्चुअली Right now, when I do something for myself and I shut off from the newsroom, though I do feel guilty. Well, I mean, yeah. So I think our time is up. We have some more comments that have come in from Facebook workshops with participants, says Sara Siddiqui. Participants playing role playing might also be effective, as Ms. Meher asked for examples. We're not coming right away. Yeah, I think, Sarah, that's a really good point. We'll think about that for next time. This was just 1 hour with the psychologists, and isme, you know, I'm the first one to admit that, you know, anger in newsroom is something that is an issue, and I found it very helpful today, and I have a lot to think about for sure. yeah. So just to, before I wrap up, I would like to say कि अगर किसी को CEJ की Wellbeing Center में free therapy sessions के लिए sign up करना है, so you just have to go to the CEJ's Facebook page. वहाँ पे हमारा flyer है, हमारा CEJ के website पे भी हमारा section बना हुआ है. It is entirely confidential. I am the coordinator for it, but even I don't know कौन से journalists sign up करते हैं. So there's a number, you message or call the number, and the assistant will take give you an appointment. We have Dr. Asha and we have Tabinda, who are the psychologists these days, running the clinic, and आपका जो है नाम, it stays confidential, it's not recorded anywhere. So they are 1 hour sessions. It's absolutely free of cost. It's for media workers, चाहे आप reporter हो, आप sub editor हो, आप DSNG operator हो. This is a free service for you, and you can have I think up to 8 sessions
So please do tell your friends about it, especially I think Rehan Heather is suggesting that we need to tell people they need therapy. Dr. Asha and Mahnoor, thank you so much for your time and for kind of looking at this sort of topic and giving us some sort of feedback based on your experience of counseling journalists. Any last thoughts that you may have? Otherwise, we'll just sign off. And yes, I want to add one thing. G. I want to say one more thing. I think just as a closing thing, I think with anger generally, one of the key things with it is unresolved ki Mahnoor ne baat ki. I would also say don't let anger grow to a point where the anger controls you. Yeah, absolutely. हम जैसे साथ साथ anger irritation को हम बहुत underestimate करते हैं, चीजों से irritate होना, anxious होना, आप अगर साथ साथ deal करते जाएंगे so it's much easier. When it's at a point where it's out of control, it's your default strategy, it's much harder कि आप उसको reverse करें. So that's just I actually had one question that slipped my mind because I'm looking at 3 different screens. अगर आपसे someone is exploding at you, कोई आपसे नाराज हो रहा है newsroom में, आपको क्या करना चाहिए? कोई और गुस्सा कर रहा है आप पे? You want to go, Manu? Yeah. So basically, again, I would emphasize the use of I, ke main. So you have to tell the other person, whoever is speaking to you, in a way that you are a human, you are an entity, you have respect, you deserve respect. So if someone was speaking to me like that, then I would probably, I'll tell you what I told you in the bullying workshop, that I would probably say that I understand what you're trying to say, but I do not appreciate you speaking to me like this, Miss Mahim. मैं उनका नाम ले लूंगी. Like I would address them in a way that I would, मेरा expression इस तरह होगा कि I don't need to scream, I don't need to shout, I don't need to get aggressive. But अगर वो सुन ही नहीं रहे, if they're constantly exploding, then I'll let them be और मैं चली जाऊंगी because I don't want to engage with the other person who speaks to me like this. I think that is the best, in my opinion, the best form of reaction that you can give the other person, because then hopefully if that person is in the right mind, उनको time मिलेगा reflect करने के लिए कि ये मैंने क्या कर दिया. Because if you engage, तो वो तो फिर आप stroke दे, वो भी stroke दे, वो भी stroke दे, तो it's like, you know, ये तो एक अजीब सा, yeah. तो excuse भी मिल जाता है ना दूसरे को, कभी मैंने कहा तो उन्होंने ये भी कहा. हाँ, उन्होंने ये भी हमारी जुर्रत कैसे हुई? हाँ, फिर वो बढ़ता जाएगा, competitive बन जाता है, और हमारा भी adrenaline high होता रहता है. Exactly. So I think walking away वाली जो बात है, I think that's जब वो वाला phase हो, just saying कि हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे. इस तरीके से. बाद में when you are ready, when I are ready, we will address it. So आप उसको भाग नहीं रहे हैं situation से. ठीक है. But you're literally just taking a break. ठीक है. Okay, so thanks a lot for your time. I really appreciate कि आप लोगों ने time निकाला, and I know Mahnoor especially the scheduling is a bit, you know. Anyways, just one last thought I want to address, because Facebook पे I was actually reading comments side by side on my phone. तो उसमें लिखा हुआ था कि if you tell someone to go for therapy, आप you're a mental case or something like that. You know, I understand that's such an innocent comment, क्योंकि सच कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप newsroom में किसी से पाकिस्तान में या कहीं पे भी आप बोलेंगे तो they feel attacked कि you think I need therapy, मतलब I'm crazy. Maybe I would have said something जो उनको लगा होगा कि मैं पागल हूँ. I need to be careful about what I need to say. So I think therapy के लिए जब आप किसी को कहें तो आप इतनी empathy के साथ कहें कि उनको लगे कि आप उनकी बेहतरी के लिए ये बात कर रहे हैं. मे बी उनके साथ जब आप अकेले बैठे हुए हो, मे बी जब लंच कर रहे हो या कुछ, तो उनसे कहें कि you know, I've heard CEJ is offering free therapy and the counselors are very good and they have this free service going on. मैं भी सोच रहा था, और you know, if you want to try it out, you can. तो अगर आप किसी को थेरेपी के लिए बोल रहे हैं तो इस तरीके से बोलें कि वो आपको मेंटल केस ना समझे, जैसे आपने ये बात लिखी हुई है. तो but I know we have a long way to go to normalize this, but we're trying, and hopefully with the efforts of CEJ this would get normalized very soon, because I know that media workers need it just as, you know, anybody they need else. support. So, yeah, absolutely. इस चीज में तो मैं firmly believe करती हूँ, ये free service आप लोगों के लिए है, इसको use करें. And यार मुफ्त की चीज है यार, you know, like free therapy with really good, नहीं, otherwise psychologists नहीं मिल रहे होते हैं, and they do it online as well. Okay, ladies, thank you very much for your time, and I think we will sign off now, and I don't know how we'll sign off, but thank you everybody for joining us, and I really appreciate the discussion. All right, okay, Khudafis. Bye-bye.